This is Computer Science Second Annual Examination 2025, Section C, Complete Solution. इसमें मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा और उसके साथ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी और एग्जाम में फुल मार्क्स गेट करने की टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा. Section C is explain half duplex and full duplex mode with one example each. Communication mode. Communication mode describes how data is transmitted between two devices. यानी कि दो डिवाइसेस के दरमियान डेटा किस वे से कम्युनिकेट करता है. One way is half duplex. It means data can move in both directions. Data cannot move at the same time, but this is a condition. Both direction में move तो करता है, लेकिन एक ही वक्त में move नहीं कर सकता. Devices takes turns sending data. Example is walkie-talkie. Full marks tip is you have to write first definition, then headings. You need at least 3 points plus one example. Full duplex. Data can move in both directions at the same time. इसमें भी दोनों तरफ मूव करता है डेटा दोनों डायरेक्शन में, लेकिन एक ही वक्त में, जबकि हाफ डुप्लेक्स में एक ही वक्त में नहीं करता. ये इनमें बेसिकली डिफरेंस है. बोथ डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा सिमल्टेनियसली. एक ही वक्त में वो सेंड भी और रिसीव भी कर सकती है. एग्जांपल्स मोबाइल फोन कॉल, टेलीफोन. Example is telephone, mobile phone call. Quick difference. Half duplex both directions but not at the same time. Full duplex both directions at the same time. Full marks tips. Always write one correct example with each mode. Odd part is explain two principles of computational thinking with examples. Computational thinking. Computational thinking is a problem-solving approach used to solve complex problems logically. Principle number one is decomposition. It means breaking a complex problem into smaller parts. Example, a school system can be divided into attendance. One part is attendance, fee management, and results. Principle number two, pattern recognition. It means identifying similarity or repeated feature in problems. Example, the same percentage formula is used for all students. Question number 4. Write in HTML code to create a web page with heading, paragraph, and link. Sample HTML code is you start first HTML, then head, title my web page, and head should be closed. इसके बाद बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी को क्लोज किया और हेडिंग 1 आपने लिखी वेलकम टू माय वेबसाइट.
दिस इज सिंपल वेब पेज क्रिएटेड इन HTML और उसके बाद आपने HTML को क्लोज कर दिया. Full marks tip include heading tags, paragraph tags, and link tags correctly. Question 4 or part is explain the differences between system software and application software with suitable examples. System software and application software. System software ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो सिस्टम को रन कर सके और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए यूज किए जाते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैनेजेस एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में परफॉर्म स्पेसिफिक यूजर टास्क. System software provide a platform for other software, while application software runs according to user needs. यूजर की नीड के मुताबिक वो डेवलप किए जाते हैं, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं. Works in the background, used directly by the user. Example of system software is operating system, while example of application software is MS Word, Excel, PowerPoint, Access, like that. How to get full marks? Tables form look neat and score better in theory questions. Question number 5. Write a JavaScript program and print numbers from 10 to 1. आपने 10 से लेके 1 तक नंबर प्रिंट करने हैं. JavaScript code for variable I equal to 10. इस पार्ट में हमने इनिशियलाइजेशन की है. ये इसके इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होगा. I greater than equal to 1, ये इसके लिए कंडीशन के लिए यूज होगा. I की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगी उस वक्त तक लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा. और 10 से 1 कैसे आएगा? बाय -1, जब आप उसमें से -1 करेंगे. डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई प्लस br, ये आई की वैल्यू शो करेगा. मींस पहले यहाँ पे 10 शो करेगा, फिर इसके बाद 9, 8, 7, 6 सो ऑन टिल 1 तक मूव करेगा. क्लियर? The loop starts from 10. The value decreased by 1 in each iteration. The program print numbers up to 1 in descending order. Full marks tip is show correct initial value, initialization, condition, and decrement. Question number 5 or part is what is big data? Explain any 3 advantages of big data. Big data. Big data refers to a very large amount of data that is difficult to store, manage, and process using traditional methods. Advantages of big data. Helps in better decision making, क्योंकि हम उसको decision making के लिए यूज करते हैं. Improve business planning and prediction, और prediction के लिए भी यूज करते हैं. और प्रेडिक्शन से हम पैटर्न डिसाइड करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसका बिजनेस प्लान करते हैं. आइडेंटिफाइज पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स क्विकली. हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर. ये इसके 4 पॉइंट्स हैं. तो आपको क्या करना पड़ेगा? राइट 1 डेफिनेशन एंड देन एनी 3 एडवांटेजेस टू गेट द फुल मार्क्स. Next, question number 6. What is artificial intelligence AI? Explain any 3 areas of AI. Artificial intelligence is the ability of a computer or machine to perform tasks that normally require human intelligence.
Area 1 is robotics. Robots and machine perform tasks automatically. ये दोनों machines और robots ये work करते हैं like a human being. Area number 2, expert system. Computer system give advice or decision like a human expert. To get full marks, you must start with a short definition before writing the area. Area 3 is natural language processing. Computer understand and respond to human language. Other areas, machine learning, computer vision, exam reminder. If the question asks for any 3 areas, explain exactly 3 clearly. Okay. Full marks tip is write short explanation with each AI area. Question number 6 or part. Draw a flowchart to find area of triangle. Formula is area of triangle is 1 by 2 times base times height. Flowchart steps are their start. First you will write the start, input base and height. Then calculate area 1 by 2 b times h. Then display area. Flowchart diagram is first of all you will start from the start symbol. Then you will use input, base and height. Then you will apply processing symbol area equal to 1 by 1 over 2 b into h. Okay, area equal to b into h. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप बेहतर ये कि आप लिखते वक्त इसको 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय h से लिख ले तो ज्यादा बेहतर होगा. बाद वक्त एग्जामिनर कहते हैं कि ये ऐसे एरर देगा, क्योंकि हम फ्लो चार्ट लिख रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह भी लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा. एरर के चांसेस नहीं होंगे, गलती होने के चांसेस नहीं वो करेगा मार्क्स काटने के. नेक्स्ट, यू विल डिस्प्ले एरिया. तो इसकी टिप्स हैं. फ्लो चार्ट order should be start, input, process, output and then stop, and this one is the stop symbol. Section C, how to secure full marks. These are some strategies, some tips to get the full marks. Number 1 is start with a clear definition. Number 2, write answers in points, headings or table form. Number 3, use technical keywords naturally. Number 4, add examples wherever required. Number 5, for code questions, write complete code neatly. Number 6 is for flowchart questions, write steps in the correct sequence. Exam advice, structured answers score better than long, unorganized paragraphs. Common mistakes to avoid in section C. Do not lose your marks unnecessarily. Do not write irrelevant theory. Do not skip examples when the question asks for them. Do not write incomplete HTML or JavaScript syntax. Do not confuse system software and application software. Do not forget to explain the areas of AI. Do not ignore the or parts. Final advice. Read the question carefully and answer only what is asked by the examiner. Thank you. Prepare smart for full marks. Practice both the main questions and the or parts.